अपडेट सर्वात जलद। साधारणतः 29 गावं पुनर्वसित आहेत. हॅलो, की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल श्री सुधीर मुनगंटीवार जी, मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट, कल्चरल अफेयर्स, फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का स्वागत करूंगा। मैं चाहूंगा आप सभी लोग उनका तालियों के साथ स्वागत करें। मेरी मराठी बहुत अच्छी नहीं है तो मैं हिंदी और इंग्लिश में ये कंडक्ट करूंगा प्रोग्राम। मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम लूंगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा पावना एसोसिएशन का, बिकॉज मंत्री साहब के साथ थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है, क्योंकि इसके बाद, इस प्रोग्राम के बाद हम नज़दीकी स्कूल में जाएंगे, दैट इज पावना विद्या मंदिर, जहाँ पे मंत्री जी अपने कर कमलों से वृक्षारोपण का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पावना एसोसिएशन एंड यूपीएल ने वहाँ पे एक स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एक टॉयलेट ब्लॉक बनाने का प्रोजेक्ट लिया है, जिसका बजट समथिंग 50 लाख रुपीस है। तो मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे थोड़ा टाइम दें। मैं इस मंच से सबसे पहले स्वागत करूंगा ऑनरेबल श्री सुधीर मुनगंटीवार जी, मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट, कल्चरल अफेयर्स, फिशरीज, पद्म भूषण श्री रज्जू श्रॉफ, चेयरमैन यूपीएल एंड चेयरमैन पावना प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन, श्री यूजर खोराकीवाला, सीएमडी बायोस्टेट, वाइस चेयरमैन ऑफ पावना प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन, मिस्टर समित चौकसी, द सेक्रेटरी ऑफ पावना प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन, मिस्टर राहुल महिवाल, द कमिश्नर फॉर पीएमआरडीए, Mr. Rahul Patil, the Deputy Conservator of Forest, Pune Region, और श्रीमान सुनील अन्ना शेलके, हमारे मावल तालुका के एमएलए साहब, आमदार साहब। Now I will request Raju Bhai to welcome our honorable chief guest and address you all. Over to you, Raju Bhai. माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी, अन्य बंगले मालिकों, मेरे भाइयों बहनों और मित्रों, महानुभाव इधर है, जो रोहित ने बता दिया है तो मैं नहीं बोलता हूँ। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि अपने साथ सुधीर भाई मुनगंटीवार जी है, और आपकी रजा से मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोलूंगा। I would like to inform you, Sudhir Bhav, that the Pavna was barren area here. When we came here, there was nothing. But after the lake was ready, when we were in Mumbai, the politician invited us to come and build bungalow here. 20 years ago, there was nothing. Today, it has become green and beautiful. People were complaining when we are there. Today, we have birds, we have wildlife, rabbits. But you know, last week, one leopard come to his bungalow to see
happy. Such a big change is there. Well done. Absolutely. Wonderful. हम लोग ने आके देखा कि नियर बाय विलेज में फैसिलिटी बहुत कमी है. स्कूल है, उसमें टॉयलेट नहीं है, विद्यालय के पास किताब की कमी है. तो बंगलों वाले, इंडस्ट्री वाले हम लोग स्कूल में मदद करते हैं. हमारा फ्रेंड ने कंप्यूटर भी दिया है स्कूलों को, छोटी छोटी स्कूल है. लेकिन मैं पहले नहीं देखा था, अभी लास्ट वीक गया तो देखा पावना विद्या मंदिर इतना अच्छा स्कूल है, 100% रिजल्ट है, पर टॉयलेट का फैसिलिटी नहीं है. स्टूडेंट सभी में तो है, लेकिन एंटरटेन प्रोग्राम इतना अच्छा करते हैं कि मैंने सोचा बम्बई की अच्छी स्कूल से अच्छा इधर प्रोग्राम करते हैं. ऐसी जगह है के लिए थोड़ा थोड़ा जब भी प्रोग्रेस होता है तो थोड़ा गड़बड़ होता है. शुरू में बंगले वाले तो आते हैं, शनि रवि जाते हैं, तो बहुत रोबरी बढ़ गया था, हाउस ब्रेकिंग बढ़ गया था. तो एसोसिएशन ने लिया, पुलिस के साथ मीटिंग किया, आपका घर में तो मीटिंग किया था बड़ा, और अभी नाइट पेट्रोलिंग किया तो सब जीरो हो गया. और इधर थोड़ा ये एरिया में पहले गड़बड़ था, एक आध तो मर्डर हो गया तो सब लोग पैनिक करने लग गए थे. लेकिन अभी पीस है, अभी कंप्लेंट कुछ नहीं है. और हम लोग ने श्योर किया है कि ये एरिया में जितना सोशल एक्टिविटी हो सके, ज़्यादा नौकरी मिले, विलेज में प्रोग्रेस है, इसके लिए हम लोग सब तैयार हैं. अपनी सबसे बड़ी बात है कि आपने बताया तो हमने 4-5 तो लगाया, लेकिन हमने चैलेंज लिया है 6 महीने में 50,000 ट्री तैयार हो जाएगा. बहुत बढ़िया. 10 लाख ट्री का प्रोजेक्ट किया है. अपना राहुल पाटिल जी है, उसके साथ मिलके बंगले वाले, प्राइवेट सिटीजन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साथ में मिलके करेंगे तो प्रोग्रेस बहुत अच्छा होगा. तो ये हम लोग करते हैं और सब लोग बोलने वाले हैं. मेरे साथियों है इधर, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और साथियों को विनती करूँ तो सब वो भी बोले. जल्दी जाना है तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं. Now I will request Mr. Juzur Khorakiwala to say something about, because he is also here in Pavna for more than 20 years, so he can give some. Respected Honorable Minister Sudhir ji and friends, when we came here 20 years ago, there was nothing. It was absolutely barren and rocks. Today, if you come down the hill from Pavna and go around, you'll only see trees, trees and trees. There are 100 bungalows, more than 100 bungalows here. And 70 of them are our members. And each member, I can assure you, has put more than hundreds of trees in their area. They may be having 1 acre, 2 acre, 5 acres. I have 20 acres, I have got 5,000 trees, which was none there. It's like a forest. And I think all the bungalow owners here have done fantastic job. Not only that, outside our bungalows, we had put dustbins all over Pavna, so that all the rubbish that people, the tourists who come here can put it there. And this kind of activities are going on with our association. So I think I must compliment all our bungalow owners who are here today, and also Rajubhai for taking such a pioneering effort. I would say a pioneering effort for Pavna, so that this whole area, and Sudhirji, I must tell you this is the most beautiful part of Maharashtra.
It will be around top 3 beautiful scenic places of Maharashtra. And I think we need government support to ensure that it remains and it becomes even better, not only for local tourists who come from Pune and Bombay, but foreign tourists who come to Bombay, who come to Pune, they should visit Pauna. So I think we need government to also help. We are always there in the front to help, to do what we can, but I'm sure from the government side also we'll need support. So thank you very much, sir, for your presence this morning. Thank you all. There were no trees here. Before 20 years. It was two Texas. Thank you, Jujur Bhai, for your lovely words. Now I'll request Mr. Samit Choksi, as Secretary of Pavna Property Owners Association, to brief us about the work we have done over these 10 years. So over to you. Good morning, everyone. On behalf of the association, I would like to welcome the Honorable Shri Minister Sudhir Mungal Tiwari to Pavna. हमने भी सोचा था कि स्पीच हिंदी में दे, लेकिन तालिया के सिवाय आपको हंसी लगेगी. So I will continue in English. As the Secretary of the Association, I was asked to give a brief summary of some of the current and past activities of our association and things that members have done in Pavna. The association has been lucky to have the support of many of our members, approximately 100 plus, who contribute and support towards various projects we undertake to preserve and uplift the ecosystem of Pavna. We understand that while we are owners of our homes, we do not own the larger ecosystem around us. And as members, we have a responsibility to maintain and improve the environment and support environmental and social ecosystem around Pavna Lake. हमारी जिम्मेदारी है कि ये इकोसिस्टम को अपलिफ्ट करें और आगे बढ़ाए. So exactly as Mr. Korakiwala and Mr. Shroff said, we are looking towards doing good. Before I speak further, I would like to take a minute to appreciate the efforts of the man and force behind the association, without whom we would have achieved many things, we would have not achieved many things we do today, and neither would we have the Honorable Minister here today to take time out of a busy calendar to join us. Thank you. Rajubhai for me has been many things: a dear friend, mentor and family. As one of the earliest people to come from the big city and build a home in Pavna, their dedicated hard work to continuously see this association come together and grow its member base. He has been a tireless advocate for the community, leading many charitable efforts around Pavna in the areas like waste management, education, proper sanitation in schools, and ensuring safety and security for bungalow owners and all other people living in Pavna. His meticulous and fluent letter writing skills has helped us navigate many hurdles working with government bodies. Okay. As the saying goes, behind every successful man is a woman. And so I'd also like to acknowledge the work of Mrs. Shroff, who has been equally instrumental in supporting the beautification and environment preservation of Pavna prior to the association being formed. She was leading many charitable efforts around Pavna. उन्होंने बहुत कुछ किया है इस एसोसिएशन के पहले ही, जब भी पहले आए थे यहाँ पे. Moving on to some of the key contributions the association has done. In 2016, there were growing burglaries
and homes in Pauna, the association response was to put in place night patrolling to help increase security for our members and overall Pauna population. Over the years, garbage dumps were increasing across Pauna, now more so with illegal camping sites. The association response was to install 100 plus garbage bins along the lake roads, and we have hired private contractors to collect the garbage and bring it to a single site in Bhavna Nagar. We have organized medical eye camps in villages. Within schools, we have provided educational material and computers for learning. Most recently, and through the support of UPL, we have inaugurated a girls' toilet at the Bhavna Vidya Mandir. Thank you. We continuously organize tree planting drives in different villages and encourage the bungalow owners to plant within their own compounds. Today we are here to increase those efforts substantially by planting 10 lakh trees over the next 2 years is our goal. I was told recently that Adani has committed 50 lakh trees in Davos, in a speech in Davos, to be planted across India. 10 crores. 10 crores. So we have started with this 10 lakh before him as a small percentage towards that 10 crores. I thank you all for coming today and supporting a small but growing ecosystem in Bhavna. Dhanyavad. Thank you, Samit Bhai, to giving information about the good work we have done over the years. Now I will give the mic to our ACF, Mr. Ashutosh Khandge, and he will take charge for honoring our chief guest and other dignitaries. Over to you, Ashutosh. थँक यू सर. पवना विभागाच्या विकासामध्ये वन विभागाचं देखील मोठं योगदान लाभलेलं आहे. तर मी आदरणीय मंत्री महोदयांचं स्वागत, श्री राजीव श्रॉफ, चेअरमन पवना प्रॉपर्टी ओनर असोसिएशन, श्री राहुल महिवाल सर, कमिशनर PMRDA, माननीय आमदार सुनील अण्णा शेळके साहेब व श्री राहुल पाटील सर, उपवन संरक्षक पुणे वन विभाग यांनी माननीय मंत्री महोदयांचं स्वागत करावं अशी विनंती करतो. अरे वो हाथ लगा रहा था उनको. थँक्यू. या ठिकाणी मंत्री महोदयांचं स्वागत कार्यक्रम पार पडत आहे. थँक्यू. धन्यवाद सर. Thank you, Ashutosh ji. Now, because we have very short time and the minister has to proceed to the other venue when he will be initiating the tree plantation campaign, I would like to request Raju Bhai to honor Honorable Shri Sudhir Mungantiwar ji with a flower bouquet. बैठे बैठे कर दो, बैठे बैठे. हाँ भाई. Okay. Okay. I'll request Mrs. Sandra Shroff, Vice Chairman UPL, to honor Sudhir Bhau. I'll honor. Yes, please, ma'am. Thank you. I'll request Samit Bhai to honor our MLA Shri Sunil Shelke ji with a flower bouquet. Samit Bhai from the association. अच्छा चलो फोटो खींचिए, फोटो के लिए चलो.
Samit bhai, you have to honor two more our dignitaries, Mr. Rahul Mahiwal from PMRDA, the Commissioner of PMRDA. And last but not the least, are Mr. Rahul Patil, the Deputy Conservator of Forest, Pune. Thank you, Rahul ji. Without your contribution, this might not have possible. Thank you so much. Thank you so much for your presence. क्या था? Now I will request our Honorable Minister Sudhir Bhau Mungantiwar कुछ शब्द हम लोगों को कहें. Over to you. इथं उपस्थित या विभागाचे आदरणीय आमदार सुनील शेळके जी, जिनके निमंत्रण से मैं यहाँ उपस्थित हुआ, ऐसे पवना प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पद्म भूषण आदरणीय रज्जू श्राफ जी, रज्जू श्राफ जी के पीछे जो शक्ति से खड़ी है वो हमारी भाभी सैंड्रा श्रॉफ जी, जूझर खोराकी वाला जी, समित चौस्की जी, यहाँ उपस्थित पीएमआरडीए के राहुल महिवाल जी, राहुल पाटिल जी, और मेरे सभी सम्माननीय प्रिय भाई और बहनों, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय राजू भाई श्राफ जी को कि उन्होंने आप सभी के दर्शन का आज योग लाकर आप सभी का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला है। यहाँ आने के बाद मैं मन में कुछ क्षण सोच रहा था कि मुंबई में रहते समय ब्रेन थोड़ा जाम हो जाता है, यहाँ आने के बाद ब्रेन ज्यादा ताकत से घूमता है। और यहाँ आने के बाद मुझे खुशी कौन से बात की हुई, तो राजू भाई ने कहा कि हम 50,000 प्लांट लगाने वाले हैं। राजू भाई, एक बात, जब ये कोरोना शुरू था तो एक बात कभी मेरे YouTube में सुनने में आई। वो बात ये थी कि पहले बचपन में हमें हमारे टीचर ये सिखाते थे कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, और सिकंदर का उदाहरण देते थे कि सिकंदर ने कहा कि मेरी अंत यात्रा निकालते समय मेरे हाथ पेटी के बाहर रखो, लोगों को ये समझने दो कि खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है, दुनिया जीतने के बाद भी खाली हाथ जाना है। और बहुत साल तक मेरे मन में यही था, पर क्वारंटाइन में एक बात ध्यान में आई कि ये अर्ध सत्य है, ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि शरीर खाली हाथ आता है, शरीर खाली हाथ जाता है, आत्मा कभी भी खाली नहीं आती और कभी भी खाली नहीं जाती। आत्मा अपने कर्म को लेके आती है, आत्मा संस्कारों को लेके आती है, आत्मा ज्ञान को लेके आती है, और उसमें जो भी हम एडिशन करेंगे वो अगले जन्म में काम आता है। आपने अगर 50,000 रुपए इस जन्म में लगाए तो मैं आपको विश्वास से बताता हूं कि आपका धन बैंक अकाउंट अगले जन्म में काम नहीं आएगा, मगर ये लगाया हुआ पर्यावरण अगले जन्म में निश्चित रूप से काम आएगा। इस बारे में मेरे मन में कोई दूर तक शंका नहीं है। मुझे बीच में एक यूरोप के 10 देशों का शिष्टमंडल मिलने आया था, उन्हें इन्वेस्टमेंट करना था, और ऐसी बातों बातों में अब इन्वेस्टमेंट तब चाइना में भी होता था, हमारे यहां भी होता था, बाकी देशों में भी होता था। उन्होंने पूछा कि भारत में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, तो मैंने सहजता से कहा कि भारत अच्छा देश है, अतिथि देवो भव मानने वाला देश है, यहाँ पे जियो और जीने दो की भावना वाला देश है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रहने वाला देश है। यहाँ दूसरे की लकीर कम करने के बजाय खुद की लकीर आगे बढ़ाने की बात करने वाला देश है। कानून व्यवस्था के साथ बाकी सब बातें अच्छी है, मगर इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह रहा हूं, मगर क्या, मगर आपके 10 देशों में से 8 देश ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन गए 20 साल से कम हो रही, और विश्व के 7 धर्मों में से 6 धर्म ऐसे है जो पुनर्जन्म मानते हैं। आपकी तो लोक संख्या कम हो रही है, इसका मतलब तो सीधा है कि आपका पुनर्जन्म फिर इस देश में तो होना नहीं है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन कम हो रही है। अब तेजी से बढ़ने वाला देश तो हमारा ही है,
आपका पुनर्जन्म होगा तो हमारे ही देश में होगा, तो पहले से व्यवस्था करो ना भैया, इन्वेस्टमेंट कर दो यहाँ पे पर्यावरण बढ़ा दो, यहाँ पे उद्योग लगा दो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दो। जब भी अगला जन्म होगा भारत में तो आपकी सुंदर जीवन की कल्पनाएं पूरी हो जाएगी। आप कोई भी डॉक्टर को पूछ लीजिए, किसी डॉक्टर ने ये कहा है कि तबीयत किसी की नाजुक होती है तो किसी ने ये कहा भैया तेरी नाजुक तबीयत है, जरा एंटीलिया में घूम के आ जा, तेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी। कोई नहीं कहता बोले माथेरान जा, महाबलेश्वर जा, ऐसे ही कहता है ना। किसी ने ऐसा कहा कि तबीयत अच्छी नहीं है, हवा पानी बदलने के लिए तू ताज होटल में 5 दिन मुक्काम कर रहे, तेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी, नहीं कहता। हवा पानी बदल दे इसका मतलब हमारा रिश्ता उस वातावरण से होता है जहां पे पेड़ है, जहां ट्री है, वहां माइंड एकदम से फ्री है। आप देखते होंगे जंगल में जितने लोग रहते हैं, पर्यावरण में जितने लोग रहते हैं, ये रिसर्च आया कि उनको डिप्रेशन की टैबलेट खानी नहीं पड़ती। डिप्रेशन की टैबलेट तो वो खाते हैं जो कंक्रीट जंगल में रहते हैं। जहां पे शुद्ध हवा है वहां शुद्ध विचार है, शुद्ध विचार है तो शुद्ध कृति है। इसलिए यहां आते समय मैं आपको सदिच्छाएं देता हूं कि आपने एक संकल्प के साथ कि हम यहां पे 50,000 ट्री प्लांटेशन करेंगे। मैं भी विश्वास देता हूं, मैंने भी 50 करोड़ ट्री प्लांटेशन के लिए लोगों को उत्साहित किया। मैंने कहा कि ये कोई एक का काम नहीं है, ये ट्री प्लांटेशन हजारों लोग, ये गोवर्धन पर्वत अगर पर्यावरण का उठाना है तो हर किसी का हाथ लगना चाहिए। एक व्यक्ति आज के मूल्य से कम अपने जीवन में 80 साल जिएगा तो 6,13,20,000 रुपए का ऑक्सीजन हमारा फ्री दे देता है वन विभाग का। हमने कभी पैसे नहीं मांगे, राहुल पटेल ने कभी नोटिस नहीं भेजा कि 6,13,20,000 का बिल हो गया है तुम भेज दो। हम इतना ही चाहते, 6,13,20,000 का ऑक्सीजन फ्री में दिया है तो 20 रुपए का एक पेड़ लगाओ, इससे ज्यादा हम क्या चाहते हैं। और ये 20 रुपए का पेड़ मैं आपको विश्वास देता हूं कि ये ऐसा ही पेड़ है। आप पूरे विश्व में जो जो चिंतक रहे हैं वो कोई कंक्रीट जंगल में बैठ के चिंतक नहीं बने, वो पेड़ के नीचे बैठ के ही बने हैं। तथागत भगवान गौतम बुद्ध से लेके प्रभु राम जी तक ले लो, जो भी महामानव है वो पेड़ के नीचे या पेड़ के आसपास बैठ के ही बना है, क्योंकि यहीं अच्छे विचार आ सकते हैं, यहीं अच्छी सोच आ सकती है। तो मैं पहुना के यहाँ के मेरे भाइयों को जो यहाँ पे प्रॉपर्टी ओनर है उनसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके चेहरे देखने के बाद मैं निश्चित रूप से बोलता हूं कि आपके पास सभी क्षमता है, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, क्योंकि आपने तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आगे ले जाए आगे कि पानी भी नहीं आया तो 20 दिन 25 दिन आपके पास क्या वो कोई आपने बनाया हुआ रिसर्च है तो पानी पेड़ को दे सकता है। तो हम जीवा तो हम यही चाहेंगे कि आप ये 50,000 पेड़ लगा के इसको ग्रीन कर दो। मैं भी आपको बताता हूं कि आप तो शतायु तो होंगे ही होंगे, मगर हमेशा हार्ट आपका ग्रीन रहेगा। जो ग्रीन लगाता है वो ग्रीन ही रहता है, ये मेरा विश्वास है। आपको पहुना एसोसिएशन के लोगों को शुभकामना देते हुए मैं ये विश्वास दूंगा कि मैं यहाँ से घूमने नहीं आया, यहाँ की हवा लेने नहीं आया, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहां पे भी बहुत जंगल है। विश्व के सबसे ज्यादा टाइगर 193 देशों में 14 देशों में है, 14 देशों में 65% टाइगर हिंदुस्तान में। और आपको बताते हुए मुझे अभिमान भी होता है, खुशी भी होती है और थोड़ी चिंता भी होती है कि सबसे ज्यादा 203 टाइगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। विश्व के सबसे ज्यादा टाइगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब वो वाइल्ड गया, वो इसमें आपका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है अभी जरा थोड़े बहुत ज्यादा। तो कल हमने आदरणीय जो हमारे भूपेंद्र यादव जी के साथ कल सीएम साहब के यहाँ उसी बारे में मीटिंग की कि हमको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस विषय को लेकर कुछ मदद करनी चाहिए। कल 2 घंटा मीटिंग चली, क्योंकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहा है। उसका कारण वो एनिमल नहीं है, हम है। हमने जो अतिक्रमण कर दिया, पर्यावरण का जो संतुलन बिगाड़ दिया और अब हम नुकसान में आ गए हैं। अभी भी सुधरने का मौका है, अभी भी पर्यावरण सेकंड स्टेज में ही है कैंसर के। हमने इसको बिगाड़ दिया तो दुनिया में हमको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। और भगवान भी कहेगा कि तुमको मैंने भेजा था अच्छे काम के लिए, अब कभी नहीं भेजूंगा। बाकी सब जो प्राणी है वो निसर्ग की चक्र के अनुपात में चलते हैं। तुम अकेले हो जो बकासुर के बाप हो, तुम अकेले हो जो शेख चिल्ली की कहानी आप जीते हो। तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर एक संकल्प करें कि यहाँ पर और ग्रीनरी बढ़ाए। और राजू श्राफ जी, हम आपके साथ है, हमारा विभाग आपके साथ है। जब भी आप याद करो,
हम आपके साथ रहेंगे, विश्वास देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल मिनिस्टर सुधीर बाबू मुनगंटीवार। आपके सारे अच्छे वर्ड्स हम लोगों ने नोट डाउन किए हैं एंड आपके लीडरशिप में हम पावना में और ट्री प्लांटेशन करेंगे because we are running short of time because minister has to visit one other location where he will be inaugurating the tree plantation campaign and also he will be visiting the site for toilet which Pavna Association and UPL is building for school children, which is 1200 students. So I would like to thank you, Honorable Sudhir Bhau Mungantiwar ji. I would like to thank you, Padma Bhushan Shri Raju Shroff. I would like to thank you, Mrs. Sandra Shroff, especially to give us this opportunity to organize this program at her property, because it's a matter of great pleasure for us to work and organize such events in such property. I would like to thank you, Mr. Rahul Patil, the Deputy Conservator of Forest, Mr. Rahul Maiviwal, the Commissioner of PMRDA, Mr. Joseph Khorakiwala, Vice Chairman of our association, Mr. Sunil Shelke, the MLA of our Mawal Taluka, and also Mr. R.P. Singh ji for his contribution. And last but not the least, our association members. Sorry, I could not pay attention to you people, but I am very thankful to you all that you took out time. Many of them have come specially, all the way from Bombay to attend this meeting. So I can see Mr. Pradeep Sagar, Mrs. Shilpa Sagar, Mr. Choksi, Mr. Gopal Amin, Mr. Amul Mahale, Mrs. Samita Shetty, Sahani, Mr. Sandhu, Mr. Vinish Dabra, Mr. Chakravarti. So thank you all. Mr. Gilotra, I'm so sorry if I am missing any of the names. So I will take permission from our Honorable Minister and Shri Raju Shroff to conclude this event, and we will proceed to the. Thank you so much. Thank you.